Assalamu alaikum. Today I am going to make a very delicious recipe for you. This is everyone's favorite. Let's start. Take water in a pot and boil it a little. Now add 1 tablespoon of salt and 1 tablespoon of oil or ghee in it. अंदर ही नहीं जा रहा है. Mix well. Now put spaghetti in it and boil it up to 70%. I'll show you it has reached 70%. अभी मैं दिखाती हूँ. ये देखिए, ना ये ज़्यादा कच्चा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पक्का हुआ, अंदर से थोड़ा कच्चा हो. Now we will dry its water and put cold water from above. Like this. मैंने इसका सारा पानी निकाल के फेंक दिया है और ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं. Now here I have taken a little ginger and garlic and cut it into small pieces. Take half a cup of oil in a pot and heat it. Now put ginger, garlic and cook it until it's light golden. Now add those vegetables. इसे भी हल्का 70% तक बनाना है आपने. ना ज़्यादा कच्ची हो ना ज़्यादा पक्की हुई. ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है. 2 tablespoon ketchup. Now add these. 1 tablespoon of chili sauce, soya sauce 1 tablespoon, vinegar 1 tablespoon. इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए. 1 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of chopped red chili, 1 tablespoon of salt and mix well. Here I have taken chicken. इसको मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर बॉईल कर लिया था और क्रश करके इसको अलग रख दिया था. Now add this. Mix well. बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में तो. माउथ वाटरिंग. ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है इसका शाशलिक. ये मैंने लिया कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून. पानी में मिक्स करके आप इसके अंदर डाल दें और थोड़ी देर तक चलाएं, अराउंड 2 से 3 मिनट तक. ये देखें इसकी शक्ल बदल गई है. अब आप इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर सकते हैं. इट्स अबाउट टू रेडी. ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बन गई है. नाउ हियर आई एम गोइंग टू ऐड बॉइल्ड स्पैगेटी इन शाशलिक. मिक्स वेल. इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू ईट. ये देखिए बहुत ही मज़ेदार जूसी सी स्पैगेटी तैयार है. आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल.